Good evening, everyone. I'm Dr. Mohit Arya from IIMT College of Science and Technology. Uh, Today, I'm presenting a research article that is a sublime technique to solve pantograph equation by modified Adomian decomposition method. So, these are the outlines of this particular presentation. Then first will be introduction. The second will be MADM, that is modified Adomian decomposition method for solving pantograph equations. Third one will be the applications, and in fourth outline we will discuss about the results, and the final point will be our references which we used to complete this kind of particular research. So in introduction, the section is introduction, and the subsection is what is pantograph. So we talk about the pantograph. So pantograph instrument for duplicating a motion or copying geometric shape to reduce or enlarge the scale. That means what? The means is pantograph is an apparatus which mounted on the roof of electric train. आप लोगों ने बेसिकली इलेक्ट्रिक ट्रेन्स देखी होंगी, उनके ऊपर ये Z शेप की एक डिवाइस होती है बेसिकली. ओके, तो ये क्या होता है, ये माउंट रहती है इलेक्ट्रिक ट्रेन की रूफ पे. तो ये क्या करती है बेसिकली, इट कलेक्ट्स द पावर फ्रॉम द ओवरहेड वायर. ओके, इट लिफ्ट और डाउन ऑन द बेसिस ऑफ द वायर टेंशन. सो बेसिकली होता क्या है, जैसे ही ट्रेन अपनी स्पीड को पकड़ती है, व्हेन इट गोज टू द स्विफ्ट, तो बेसिकली जो इसका ये अपर पार्ट है पेंटाग्राफ का, ओके, ये अपर पार्ट जो वायर है उसके साथ क्या करता है, एक टच में आता है. ठीक है ना. नेक्स्ट, टिपिकली अ सिंगल वायर इज यूज्ड विद रिटर्न करंट रनिंग थ्रू द ट्रैक. इट इज a common type of current collector. Typically, a single wire is used with a return current running through the track. The electric transmission system for modern electric rail systems consists of an upper weight carrying wire known as catenary, from which is suspended a contact wire. तो बेसिकली ये जो थ्योरी हमने अभी बताई है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम एक पेंटाग्राफ को जानने की कोशिश करते हैं. बेसिकली पेंटाग्राफ का ये जो नीचे का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फुट रीजन. ओके, अब जो हमारे जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, इसमें ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं हॉर्न बुश. ओके, ये होती है आपकी कॉन्टेक्ट स्ट्रिप. ये कॉन्टेक्ट स्ट्रिप बेसिकली अटैच होती हैं जो आपके ओवरहेड वायर होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी इस पेंटाग्राफ के थ्रू ट्रेन के इंजन तक सप्लाई होती है. इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट स्ट्रिप. ये जो पार्ट होते हैं इनको बोलते हैं अपर आर्म, एंड जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं वायर आर्म. ओके, नेक्स्ट जो होता है आपका ये दिस वन, इट इज कॉल्ड गाइड हेड, दैट इज इन शॉर्ट इज सेड टू बी GH. एंड दिस पोर्शन जिससे हमारा जो फुट रीजन है कनेक्ट होता है हमारे जो पर्टिकुलर अपर रीजन है उसके साथ, इसको हम बोलते हैं नी. ओके, एंड दैट इज कंट्रोल स्क्रू, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं CS. और नेक्स्ट इज आर लोअर आर्म, इसको हम बोलते हैं LA. राइट, तो दिस इज आर फिगर फर्स्ट. नेक्स्ट, पेंटाग्राफ इज अ सेट ऑफ आर्कुलेटेड आर्म्स फिक्स्ड ऑन द रूट ऑफ द इंजन. आर्कुलेटेड आर्म से हमारा मतलब क्या हो गया, जैसे हमने बात की लोअर आर्म की बात की, हमने वायर आर्म की बात की, हमने ये हॉर्न बुश की बात की, हमने गाइडेड हेड की बात की, हमने अपर आर्म की बात की. ठीक है, तो दीज आर व्हाट, दीज आर द सेट ऑफ आर्कुलेटेड आर्म्स फिक्स्ड ऑन द रूफ ऑफ द इंजन. इट अनफोल्ड्स एंड एक्सटेंड्स अलोंग अ वर्टिकल एक्सिस. मतलब ये क्या होता है कि वर्टिकल एक्सिस पे ये फोल्ड भी हो सकता है और एक्सटेंड भी हो सकता है. ठीक है, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग. ओके, द हॉरिजॉन्टल एंड पीस ऑफ द पेंटाग्राफ इज कॉल्ड हेड. मैंने आपको बताया ही था, ये जो पर्टिकुलर ये जो होता है ना, ये वर्टिकल एंड, इसको हम बोलते हैं हेड. ये पर्टिकुलर इसको हम बोलते हैं हेड. ठीक है, नेक्स्ट, द हेड इज फिटेड विद कार्बन स्ट्रिप.
Their number and types depend on the nature and intensity of the current to be transmitted, that is AC or DC. These carbon strips along the catenary contact wire, thus capturing the electricity required to power the engine's ट्रांजिक्शन मोटर्स। ओके, तो बेसिकली अब हम थोड़ा सा है ना समझते हैं कि पेंटाग्राफ इक्वेशंस हैं क्या, ठीक है, और उनकी जनरेशन कैसे हुई और क्यों हमें उन इक्वेशंस पे रिसर्च करने की जरूरत पड़ी और उस रिसर्च से हमें बेनिफिट क्या होता है, ये हमारा मेन टारगेट है समझना। तो आप लोगों ने बेसिकली इलेक्ट्रिक ट्रेन्स को बहुत अच्छे से देखा होगा जब भी आप ट्रेन्स में सफर करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका ये ओवरहेड वायर होता है, ठीक, ये वायर इसको हम बोलते हैं कैटेनरी, ठीक, इट इज अ शेप ऑफ अ लेडर, बट लेडर ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल नहीं, एक पर्टिकुलर लेडर ऑफ वायर हो गया एक तरीके से, है ना। जो इसका अपर साइड होती है इसको हम बोलते हैं मैसेंजर वायर। ये जो बीच में इसकी जो इनको ज्वाइन करने वाली पट्टियां होती है इसको हम बोलते हैं ड्रॉपर। एंड देन आपका स्लाइडिंग पॉइंट होता है ये पॉइंट, ठीक है ना, ये पॉइंट जो होता है आपका जो आपके पेंटाग्राफ है, ठीक है ना, पेन हेड जो होता है और जो आपका जो लोअर वायर होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो पॉइंट आता है इसको बोलते हैं हम स्लाइडिंग पॉइंट, ठीक। द पॉइंट इज कॉल्ड अपर लिंक, पेन हेड, कॉन्टेक्ट वायर इज दिस, ओके, एंड रेल कार बॉडी, या आपका जो ट्रेन की अपर बॉडी होती है इसको हम बोलते हैं रेल कार बॉडी, ठीक है ना। लोअर आर्म अपर आर्म के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज आवर लोअर लिंक। अब ये काम कैसे करता है इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसका रोल कैसे डिले डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आता है, ये भी एक बहुत सोचने वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है। बेसिकली अब जैसे ही हमारी ट्रेन चलती है तो ट्रेन चलने के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक करंट इस ओवरहेड वायर में है ये क्या करता है, पेंटाग्राफ उस करंट को कलेक्ट करता है, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद अब ट्रेन का जो इंजन होता है उसमें बेसिकली इन्वर्टर्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, इस डीसी जो इससे मिलती है हमें ओवरहेड वायर से उसको एसी में कन्वर्ट करती है। बट इतना आसान नहीं है उसको एसी में कन्वर्ट करना, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि देयर इज सम डंपिंग। जब ट्रेन इस वायर के साथ जाता है तो बीच बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पे इनका कॉन्टेक्ट टूटता है, वहां पे क्या होता है, जो कंटिन्यूअस आपका बेसिकली जो आपका कंटिन्यूअस करंट जा रहा है इंजन तक, ठीक है, वो ब्रेक होता है। अब उस सिचुएशन में हमें तो ट्रेन की जो इंजन है उसको कंटिन्यूअस सप्लाई करनी है क्या, एसी। तब उस सिचुएशन में आपका इन्वर्टर जो आपके इंजन के अंदर लगा रहता है वो उसका रोल सामने आता है। वो क्या करता है, वो करंट को कलेक्ट करता रहता है, ठीक, और करंट को कलेक्ट करता रहता है और एक जो अमाउंट ऑफ करंट हमारे पास चाहिए वो अमाउंट हमारे ट्रेन के इंजन को सप्लाई करता रहता है। अब बात क्या है कि जो इन्वर्टर होता है उसके अंदर जो हमारा बेसिकली मैकेनिज्म है, ठीक है, उस मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो करंट वो इन्वर्टर कलेक्ट कर रहा है देयर इज सम डिले बिकॉज ऑफ डंपिंग, ठीक, डंपिंग की वजह से क्या हो जाता है, डिले, जो करंट पास हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, थोड़ा डिले हो रहा है। अब उस डिले की वजह से इन्वर्टर की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो इन्वर्टर का इंजन खराब हो सकता है, ठीक है ना, उसकी कॉइल्स अंदर से जल सकती हैं, ठीक, तो वहां पे ट्रेन खराब हो सकती है बीच रास्ते में ही। तो उसको क्या करना है आपको, बेसिकली वो जो इन्वर्टर है उसको आपको बहुत ही पर्टिकुलरली उसमें एरर आपका कम से कम हो, जो आप इलेक्ट्रिक करंट कलेक्ट कर रहे हो और फिर उसके बाद एसी बना के सप्लाई कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज से ओवरकम करने के लिए, उस पर्टिकुलर एरर को ओवरकम करने के लिए हम पेंटाग्राफ इक्वेशंस पे काम करते हैं। सो द कैटेनरी इज मोर कॉम्प्लेक्स देन सिंपल पावर केबल। अब उसने कैटेनरी को मोर कॉम्प्लेक्स बोला सिंपल पावर केबल से। कैटेनरी आपकी क्या, ये जो वायर है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, दिस इज आपका कैटेनरी। लेकिन सिंपल पावर केबल में क्या है, आपका कंटिन्यूअस करंट फ्लो हो रहा है थ्रू ट्रांसफॉर्मर, बट यहाँ पे क्या है, इट इज मेड अप ऑफ मैसेंजर केबल, कॉन्टेक्ट वायर्स, ड्रॉपर्स, स्टेडी आर्म्स एंड टेंशन डिवाइसेस। All these elements are supported at regular intervals by a series of mats. The catenary's architecture is designed so that even at high speed, contact between the catenary contact wire and the pantograph is permanent and uninterrupted, right?
the cable of the overhead line is so heavy that suspended between 2 points, they do not form a straight line but sink due to their weight. For higher speed and in order to get a continuous contact between the catenary and the head of the pantograph, thus avoiding excessive power loss, the catenary contact wire must maintain in a horizontal position. It must also be rigid enough to interact in a dynamic way with the pantograph. ओके तो ये बेसिकली मैं आपको अभी इस फिगर के थ्रू सारे पॉइंट्स ये ऑलरेडी समझा चुका हूँ. ओके अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिले डिफरेंशियल इक्वेशंस. अब हमने डिले तो बता दिया कि डिले क्यों अकर हुआ हमारे पेंटाग्राफ जो डिवाइस थी या जो हमारी पेंटाग्राफ इक्वेशंस है उनमें. तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिले डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, उनका रोल क्या होता है. ठीक है. सिस्टम ऑफ डिले डिफरेंशियल इक्वेशंस मोनोपोलाइज द प्लेस ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस in all areas of science and engineering like biology, economics, control theory and electrodynamics. Particularly, these equations come into an interest when the models 1 and 2. I will share about these two models also when we'll go to the references. Okay, which were based on the ordinary differential equation fail completely. In real, a pantograph is a device at the upper part of the train that grabs electric current from the overhead electric wire that is called catenary and transfers to the train motors. Because of this process, the train moves with a constant speed. The main task was to analyze the motion of a catenary in response to a pantograph moving with constant speed. At some distance from the supports, the simple solution for the wire and pantograph displacement was obtained by neglecting the inertia and elasticity of the pantograph. Near a support, this solution starts to give a huge perturbation as it predicts discontinuities in the vertical pantograph velocity. सीधी सी बात ये बताना चाह रहा है कि हमारे पेंटाग्राफ में जो मैंने अभी आपको बताया कि जब वो हाई स्पीड कांस्टेंट स्पीड्स पे आ जाती है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है कि देयर इज सम गैप बिटवीन कैटेनरी. हाई होता है बेसिकली, उसका वेट बहुत हाई होता है, बट देयर मस्ट बी या देयर कैन बी एनी काइंड ऑफ गैप और करंट का जो सर्कुलेशन होता है उसमें एक डिसकंटिन्यूटी आ जाती है. तो दैट कैन बी अ पर्टुर्बेशन. पर्टुर्बेशन मीन्स दैट कैन बी अ गड़बड़ी. ठीक है ना. तो एक गड़बड़ी हो सकती है और आपका जो इंजन है वो डैमेज हो सकता है. तब उस सिचुएशन में हमारी क्या होती है, पेंटाग्राफ इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है. उनसे हम क्या करते हैं, एरर को एनालिसिस करके, ठीक है ना, लीस्ट एरर के साथ जो आपका इन्वर्टर का जो ट्रेन में इन्वर्टर होता है उसके इन्वर्टर के जो करंट है उसको बेसिकली क्या करती है, कलेक्ट करती है लीस्ट एरर के साथ. सो दिस इज द पेंटाग्राफ इक्वेशन, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1. सो दैट्स व्हाई पेंटाग्राफ इक्वेशन वाज invented by Ockenden and Taylor, that is in the reference number 3, which shows the electricity collection system of the catenary for trains to confirm that the contact is maintained throughout the overhead wire. So in chapter 5, non-homogeneous pantograph equations, that is in reference number 4, such that, so this is our pantograph equation. Here U0, that is our initial condition, that is U0. The t is time, that is between 0 and capital T, Qn, because of which the delay occurs, and lambda m's are the continuous functions. Okay, and n is 1 to m. Okay, let's go further. Now we will discuss about the modified Adomian decomposition method to solving pantograph equations. Right. So for the sake of convenience, we write the equation 1 again. Okay, we have written it in the operator form. Okay, now applying inverse operator both sides, we will get the equation number 2. Okay, where u0 represents the term arises from using the given conditions. Okay, these are the given conditions. Now what have we done, we just use the previous equations. Okay, and we will get the equation ut equal to phi t plus L inverse is what, the inverse operator, that is summation n equal to 1 to m lambda and t u q and t.
ओके, जो हमारा अब हमारा क्या टारगेट है, हम मॉडिफाइड डोमेन डिकम्पोजिशन मेथड में क्या करेंगे, जो फाइव टी है ना, इस फंक्शन को आप दो पार्ट में तोड़ लो, दैट इज F1 एंड F2। ठीक है, तो हमने इसको दो पार्ट्स में तोड़ लिया, देन and it can be written as L inverse summation n equal to 1 to m lambda n t u q n t। Okay, let the solution of 3 exist in a converging series form। अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि मान लो इसका सॉल्यूशन एक कन्वर्जिंग सीरीज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे हमने एक कंसिडर किया। ओके, तो ये हमारी सीरीज फॉर्म है, हमारी इक्वेशन नंबर 4। नाउ यूजिंग इक्वेशन 4 इनटू इक्वेशन 3, हमारी ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन 3 होगी, दैट इज समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी u k t equals to f1 plus f2 L inverse summation n equal to 1 to m lambda n t। ओके, हमने यहाँ पे lambda n t में कोई चेंज नहीं किया, u q n t जो था हमारा, उसको हमने क्या किया, सीरीज की फॉर्म में ब्रेक कर दिया, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 5। ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर, द एप्लीकेशन ऑफ modified domain decomposition method। okay, so now here what we are seeing here, हमारे पास एक क्वेश्चन है, दैट इज हमें एक रेकरेंस रिलेशन पहले डिफाइन करना पड़ेगा पेंटाग्राफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये जो रेकरेंस रिलेशन इक्वेशन नंबर 6 का आया, ये बेसिकली हमारा जो आया वो इस इक्वेशन से आया। कैसे आया, आप इसको ना, ये जो पर्टिकुलर टर्म है इसको आप ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक कर लीजिए कैसे, k इक्वल टू 0 1 2 3 आप जब रख के ब्रेक करेंगे, तो आपका सबसे पहले टर्म आएगा u0t, सेकेंड टर्म आपका आ जाएगा u1t, थर्ड टर्म आपका आ जाएगा u2t। ठीक, और आपका इस तरीके से फोर्थ, और आपका एन टर्म आ जाएगा un माइनस वन इंटू टी। और ये हमारी सीरीज कहाँ तक जा रही है, अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो आपका जो फर्स्ट टर्म आएगा दैट इज u नॉट टी, तो u नॉट टी हमने क्या कंसिडर कर लिया, दैट इज f1। तो हमने क्या किया, u नॉट टी हमने क्या ले लिया, ये पार्ट ले लिया, केवल f1 वाला। ओके, अब हम बात करते हैं u1t की। ठीक है, तो u1t में हमने क्या लिया, f2 प्लस एल इनवर्स, और ये वाला हमारा पार्ट हो गया। ओके, आगे देखते हैं कैसे। अब हमने बेसिकली क्या किया, हम ले रहे हैं u1 को, अब u1 के साथ हमें इतना पोर्शन लेना है, इतना, क्योंकि हम u0 के साथ तो f1 को ऑलरेडी ले चुके हैं। अब एक बात मुझे बताइए, जो हमने k इक्वल टू 0 पुट किया है यहाँ पे, तो ये हमारा q0, ओके, q1t आ जाएगा, राइट। तो देन हमारा जो बेसिकली आएगा वो होगा f2 प्लस एल इनवर्स समेशन n इक्वल टू 1 टू m लैम्डा एन t, एंड देन आपका आ जाएगा u नॉट q n t। चलिए चेक करते हैं, तो ये आपका हमारा एज इट इज u नॉट q n। अब इसी की हेल्प से हमने अपना k प्लस वन कंपोनेंट भी लिख दिया है, दैट इज योर L इनवर्स समेशन n इक्वल टू 1 टू m lambda nt uk q nt। ओके, वेयर n is greater than equal to 1। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, हम एग्जांपल के बताते हैं आपको कि बेसिकली कैसे ये एग्जांपल्स पे अप्लाई होती है थ्योरी, और हम इसको कैसे काम कर सकते हैं। ओके, सो एग्जांपल इज व्हाट वी हैव, जो आपका फंक्शन है दैट इज माइनस 1/144 e टू द पावर माइनस टी ब्रैकेट 197 t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 144 एंड ब्रैकेट क्लोज, कॉमा u0 यानी कि u टू द वैल्यू at point 0 that is equal to 0। okay, so this is our equation number 7। okay, now what we have to do, we have given the value of m, right, the value of m is 4, we have given the lambda 1 that is 3 e to the power minus 5 by 6 t। okay, next lambda 2 is 2 e to the power minus 2 by 3 t, then your lambda 3t is equals to e to the power minus 1 by 2 t, and next lambda 4t equals to minus 3 e to the power minus 3 by 4 t, right। So these are the value of given of lambda। okay, so we will use these values in this particular equation number 6। okay,
we will use the value of lambda 1, lambda 2, lambda 3 and lambda 4 in this equation number 6. We will use the value of m, okay, in the equation number 6. Now there are more values given, that is q1. Q1 is 1 by 6. Next is q2. Q2 is 1 by 3. The next is q3, that is 1 by 2, and the next is q4, that is 1 by 4 for equation 1. So here these are the value for what? For these values are for equation number 1. So this was our first equation. Okay, we use this equation number 1 to get a recurrence relation. Okay, mark my words, we use this equation number 1, okay, to get a recurrence relation 6. Okay, so now we will use all these q1, q2, q3 and q4, okay, in this 6 to get the solution. Now when we get the solution, we will get it into a series form. Okay, now the question arises, why the solution be in the series form? So the answer is so simple, and it has been as we had predetermined before, that the solution of our given problem in a converging series form. Okay, so if the solution of the given problem in a converging series form, and because of the equation number 6, we will find out the components u1, u0, u1, u2, u3 and un. The sum of these components, listen carefully, the sum of these components will be in the form of this. Okay, and the sum of infinite number of these components, okay, will give your particular series, that is equation number 4. Okay, so if we get the solution in a series form, we cannot find out the infinite number of terms. That is a main point. Okay, if we cannot find out the infinite number of terms, then how will we compare, how will we tell the solution is correct, or we are getting a good solution, or we are working with the right problem? Okay, so in that case, what will you do? You will take n number of terms. These n number of terms can be finite, 24, 25, 27, 28, 50 terms. Okay, you will take 50 terms. Okay, 50 terms means u0, u1, u2, u3 and the last one is u49. So these all terms will be total 50 terms. Okay, when you will add all those terms, you will get a solution, but this will be a truncated series solution, right? In case of truncated series solution, you all know that when we study the numerical analysis, when we truncate a series, either it is Taylor or it is Maclaurin or it is Legori, okay, we must get a kind of error, okay, in a truncated series solution. So that error should be removed. Okay, the error should be minimized, right? So to check the error, we will compare the particular estimated solution. That estimated solution will be the approximated solution. I will correct myself. That will be compared with the exact solution, or with the help of this exact solution, we can find out the absolute error as well. That absolute error must help us for the comparison of the method. Okay, so in order to solve equation number 7, okay, this is our equation number 7. So in order to solve this particular equation, where the initial condition is also given,
we use scheme 6. So this is our recursive scheme. We will use this scheme 6 to solve this particular equation number 7, right? On solving all the components, we obtain the nth approximation. Okay, that is known as phi n for n equal to 1, 2, and 3. Numerical results of the absolute error function, I told you just before that we will use this exact solution. Okay, we will use this exact solution to find out the absolute error and to compare the efficiency of the method for n equal to 1, 2, and 3 obtained by these approximations, okay, are summarized in the comparison of previous result in table 5. So now we'll see what the table says. Okay, the table is saying that firstly we find out the absolute error using the Adomian decomposition method. Okay, so these are the exact values, okay, of the given solution at point 0, 0.05, 0, 0.10, 0, 0.15, and we are checking all these values up to the number 1, right? Now next, what we are doing, these exact values are obtained using that ut equal to t square plus t e to the power minus t. Okay, when we put the value of t 0.05, we will get this exact value. When we put the value of t, that 0.10, we will get this value, and simultaneously all these points of t, we will get these exact values. Now, using Adomian decomposition method at n equal to 1, at point 0.05, this was the absolute error. Okay, at 0.10, the absolute error was this. Okay, so at these particular times we find out these particular errors, right? And at n equal to 2, these are the absolute errors. Okay, at point 0.10, 0.15, 0.20, and up to 0.90, 0.95, and 1.0. Similarly, at n equal to 3, these are the absolute errors using Adomian decomposition method at point 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, up to 0.95 and 1. Okay, so this method has been used previously. So this is our absolute error, okay, by using our method, that is modified Adomian decomposition method at n equal to 1. Okay, here you see the error is 6.839. Our error is 6.725, better than this, because here we are having less error than this particular. At the point 0.10, we are seeing that 5.147, here 5.327. There is a gap of 0.2. Okay, so in research the gap 0.1, 0.2, 0.3 gap is very valuable. Okay, so here we see that at point 0.95. okay, here is a 2.888 97654 10 to the power minus 2, and there here is 2.090810752. so here is the good gap. Here is the error of 2.8, here is the error of 2.09. it is a good gap. Okay, now here is the error of 3.281, here is the error of 2.33. so this result is quite promising at n equal to 1. Similarly, we will check the result at n equal to 2. So here what we see, we are seeing that at point n equal to 2, the error was 1.410, here was 1.3965. okay, so the error is lesser than the particular n equal to 2 at 0.05 points. Okay, we will check the one random 0.75 at n equal to 2, it is 4.63071, and here is 4.220. so that is also less than, right, in the comparison of previously used Adomian decomposition method. And if we talk about at the point 1.0, at
0.1.0, the absolute error at n equal to 2 is 1.2557182, and here is 1.110492543. So here the error is also lesser than this particular previously used method. Now we will go for the n equal to 3. At n equal to 3, here what we see? We see that the error is 1.09815576, and here the error is 7.53. So here we see the error at near the origin is bit higher, okay, than the previously used method. But as we move forward to the point 1, what we see? The error at point 0.10, that is 3.39129, and here is 2.53. The error again reduces by the previously used method, okay. At point 0.65, here we see that 2.7064, and the error is 2.62164. The error again reduces, and at point 1 the error is 1.843, and here the error is 1.756. So here we are seeing the error is continuously decreasing. The error is lesser than the previously used method. So we can say that the research is quite good. So the results, what the results told? In order to solve equation 1 using modified domain decomposition method, an analysis of the convergence of the proposed have been discussed in the full length manuscript that is been submitted to the journal, which shows MADM converges to the unique solution under some reliable conditions. Okay, I want to tell you one thing. If we work in any kind of numerical method, we must have to show its convergence. Okay, if the method does not converge to the exact solution, then the method is in vain. Okay, so here I discussed about the method, I discussed about the example, okay, but the method is good when you have the convergence analysis. Okay, so I will discuss the convergence analysis when my research article will be published. Okay, but right now I cannot discuss it, but I have developed it quite comfortably. Okay, an example is solved with MADM for n equal to 1, 2, and 3, and compared with ADM. In table 1, we observe that for n equal to 1, 2, and 3, the value of t increases with a step size 0.05, and the absolute error given using modified domain decomposition method for the solution of equation 7 is less in the comparison of a domain decomposition method. So now these are the references I used to do this research, although there are a lot more references, but I think that these are sufficient enough to convey the research procedure to all of you. Thank you very much from my side. Thank you very much.